Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will disseminate the knowledge about qualities of the counselor. As we know that counseling is the scientific process. It means ordinary person or layman cannot give the counseling. There are the various fundamental or essential qualities possessed by the counselor. Number 1, professional. Dear students, counselor must be professional. It means the person who has having in-depth knowledge and expertise in the concerned field. When we have to repair the window, dear students, what comes in our mind? The carpenter. When we have to sew the cloths, dear students, what comes in our mind? The professional person whom we called tailor master. Dear students, if we have to treat the disease, what comes in our mind? The concerned specialist whom we called doctor. That is why counseling is based upon the professionalism. It means only those persons who are experienced, having the mastery in concerned field, they can provide the counseling. Number 2, empathetic. As we know that empathy means emotional bonding or feeling about any person. Dear students, in the counseling, there is one of the essential setup. That setup is known as rapport building. Dear students, rapport building is not possible. I mean to say you, counselor cannot develop the healthy relationship with the client without rapport building. And rapport building is by and large based upon the empathy. That is why whenever the counselor has to find the solution of the problem, the good counselor always solves the problem onto the shoe of the client. Number 3, confidentiality. Dear students, confidentiality simply means the counselor cannot disclose the information. I mean to say you put the information in the public domain because it will make a worst situation to the client. Dear students, as we know that in counseling, client shares the sensitive information, but it does not mean counselor will disclose that information. For example, sensitive information in sense property disputes or rivalry between the parents and children, tussle between the husband and wife, or sensitive information related to the murder, thefting, looting, any sensitive information. As per the norm of counseling is concerned, counselor should never disclose the information which is given by the client. Otherwise, it will become problematic. The basic problem
which will be emerged, that is the counselor will lose the trust. तो एक ट्रस्ट खत्म हो जाएगा जो काउंसलर और काउंसिली के दरमियान है. नंबर 4, पेशेंस. Dear students, patience is another fundamental quality of the counselor. It means counselor has to always accept and accommodate the client. For example, counselee possesses, I mean to say your client possesses number of ailments like mental health related issues, and due to that counselee loses the, I mean to say, mental balance. But it does not mean counselor will also lose. The undesirable behavior which is possessed by the client, the counselor should always accommodate that behavior. शायद आपने नाम सुना होगा, one of the physician who was treating in United States of America, he was also the American born psychologist, namely the B.F. Skinner. Once B.F. Skinner was treating the patient who is having biological ailment related to urination and defecation, and meanwhile the patient also possesses psychological problem. He was abnormal. एक दिन B.F. Skinner उसे एग्जामिन करने के लिए गया. When the B.F. Skinner as a physician went close to the patient, the abnormal patient who also possesses biological ailment gave the strong slap onto the face of the B.F. Skinner. जोरदार का थप्पड़ दिया. लेकिन B.F. Skinner has not lost the mental balance. B.F. Skinner has not aggressively dealt with the abnormal patient. Next day, B.F. Skinner ने जेब में चॉकलेट लाया. जब वो इसी पेशेंट के सामने पहुंचा तो पेशेंट ने स्पिट उसके चेहरे पे किया, थूका, spitted onto the face of B.F. Skinner. B.F. Skinner has given the smile and also gave the chocolate to the mentally ill patient. जब उसने चॉकलेट का टेस्ट लिया तो उसे बहुत मजा आया खाने में. तो थर्ड डे the patient was anxiously waiting and looking towards the door कि चॉकलेट देने वाला पर्सन कब यहां पर आएगा. तो जब B.F. Skinner वहां पर पहुंचा along with some other reinforcement, तो ना तो उसके चेहरे पे उसने थूका ना तो थप्पड़ मारा, सिर्फ देखता रहा कि कब ये जेब से कुछ खाने की चीज निकालेगा. और मीनवाइल उसने खाने की ईटेबल चीज एक एबनॉर्मल पेशेंट को दी. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम the B.F. Skinner as a physician completely shaped and modified the behavior of abnormal patient. और उसके बाद उसकी सर्जरी थिएटर में होती है. Dear students, here point is कि counselor must be always patient. क्योंकि काउंसलिंग के पास और जो क्लाइंट होता है कि उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है. बट एनीवे counselor must be accommodative. Number 5, encouragement. Dear students, the another important or essential quality must possessed by the counselor, that is encouragement. It means to develop the hope, to instill the hope. क्योंकि हम उम्मीद के सहारे जीते हैं. जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, अगर पेशेंट मेलनगेंसी का शिकार भी होगा, इफ द पेशेंट possesses acute malignancy,
थर्ड स्टेज में है, इट मीन्स पेशेंट को कोई चांस नहीं है बचने के, फिर भी डॉक्टर पेशेंट को होप देता है कि जो आपकी जो ये बीमारी है इसे मैं लेफ्ट हैंड ठीक कर दूंगा, इट इज नॉट बिग इशू, आई माई सेल्फ विल डील विद इट। डॉक्टर ऑलवेज इंकरेजेस द पेशेंट, क्योंकि किसी को होप दिलाना यह बड़ी चीज होती है, और डॉक्टरी में इसे, मेडिसिन में इसे कहते हैं झूठा सच। वी कैन नॉट डिस्करेज द पेशेंट, I mean to say you, by and large, doctor cannot discourage the patient. And same is the case in counseling. The counselor must encourage the patient. अगर प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट भी होगी या जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है, इट इज वेरी मच क्रिटिकल, डिस्पाइट द odds and evens, the good counselor is that who will always encourage the patient. Number 6, good listener. Dear students, listening is as important as speaking is. As we know that the counselor ought to be good listener, because we cannot, I mean to say you, counselor cannot truly understand the nature of the problem. एक काउंसलर प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर सकता है, नहीं समझ सकता है क्लाइंट की प्रॉब्लम को विदाउट द लिसनिंग, बिकॉज थ्रू केयरफुल लिसनिंग counselor can get the or collect the information from the client. That is why it is being considered one of the important qualities of the counselor. And final quality, ethical concern. Dear students, ethical concern simply means righteousness of the counselor, fairness, justice, honesty of the counselor. हर एक काउंसलर को अपनी फील्ड के साथ जस्टिस करना चाहिए। यहां पर अब काउंसलर की बात नहीं है, हर किसी पर्सन की जो बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी भी शोबे के साथ जुड़ा है, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो डॉक्टर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब हम डॉक्टरी फील्ड पे नज़र डालते हैं कि एक पेशेंट 500 mg टेबलेट लेता है, 1000 mg टेबलेट लेता है, लेकिन फिर भी फर्क नहीं होती है। वाई? क्योंकि जो ये मेडिसिन है ये एक गोल्डन मिल बन गई, स्पेशली इन आवर कंट्री। जो फार्मा कंपनीज है उन्होंने साइंटिफिक लेबोरेटरीज नहीं खोली है, बल्कि अपने बिजनेस प्लांट्स खोले हैं। सो इट मीन्स दे आर वायलेटिंग द इथिकल कंसर्न। अब ये मेडिसिन की बात नहीं है, हर एक फील्ड की, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात ले लो, चाहे आप टीचिंग की बात ले लो, इट इज़ द बिगेस्ट करप्शन। चाहे आप जुडिशरी की बात ले लो, हर जगह करप्शन है, हर जगह इथिकल वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जो ही इथिकल वायलेशन हो जाती है तो इट लीड्स द सिस्टम टू बिकम डिफेक्ट। एंड दीज वर द मेजर एंड prominent qualities possessed by the counselor. Dear students, if you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe my channel so that you will get the upcoming videos. Thank you and grow strong.